about conjunction. So let's start to explain it. Here I am telling you the definition of conjunction. A conjunction is a word for joining one word to another word or one sentence to another sentence. मीन्स कंजक्शन एक वर्ड है जो कि एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से और एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जॉइंट करता है. और हियर इज सम एग्जांपल ऑफ कंजक्शन लाइक एंड, बट, एज वेल एज, और, बिकॉज, and most other example are also available of conjunction. Let's start in my next slide. Here in this slide we can see here the types of conjunction. Here is two types of conjunction: coordinating conjunction and correlative conjunction. Coordinating conjunction has one word conjunction. In coordinating conjunction only one single word used to join one sentence to another sentence or one word to another word, like and. Here we can see the example of and is I like strawberry and bananas on my cereals. ठीक है. The next one is nor. Bob does not like broccoli nor do I. Next one is but. Jill likes oranges but does not like apples. And next is or. We can eat salad or vegetable for dinner, and so. So all these are the coordinating conjunction. And next one is correlative conjunction. The word which has two pair which are used in pair. ठीक है. जो कि वर्ड्स होते हैं, कुछ वर्ड्स कंजक्शन वर्ड्स होते हैं जो कि पेयर में रहते हैं, उनको कोरिलेटिव कंजक्शन कहते हैं. जैसे बोथ एंड, आइदर और, नाइदर नॉर, वेदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो. ये सारे ऑल दीज वर्ड्स आर कोरिलेटिव कंजक्शन. ठीक है. एंड हियर इज सम एग्जांपल ऑफ कोरिलेटिव कंजक्शन इज बोथ एंड. द डिनर वाज बोथ डिलीजियस एंड न्यूट्रिशियस. ठीक है. द सेकेंड वन है आइदर और. I will not either. I will eat either carrots or peas for dinner. ठीक है. Neither nor, Natta likes neither milk nor ice cream. Actually, here is some information about either or and neither nor. Either or को हमेशा positively use किया जाता है. When we are using any positive sentence, then we will use either or. और neither nor we will use always in negative way, negative sentence. ठीक है. And next one is whether or, and next one is not only but also. So let's start to my next slide. Here I am telling you briefly about the coordinating conjunction. The coordinating conjunction are words used to connect words, phrases and independent clauses. ठीक है. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, एक कंजक्शन वर्ड्स में जो वर्ड्स होते हैं वो एक वर्ड को दूसरे वर्ड से, फ्रेजेस को, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए यूज़ करते हैं. और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑलवेज हैज सिंगल वर्ड. ठीक है. फॉर, नॉर, एंड, बट, और, येट, सो, ऑल दीज आर द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. ओके. हियर इज सम एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. The kids get bored so they went to the park. ठीक है. The second one is the Rita and her friend going to Mumbai by aeroplane. The next one is my mother brought carrot and beans. ठीक है. as we are seeing here कि हम लोग सभी इसमें केवल सिंगल वर्ड यूज़ कर रहे हैं. We are using only single word to join sentences and words. ठीक है. I went to meet Mia but she was not there. ठीक है. There is, we will use but for the single word, join word. I trust him because he speaks the truth. And because is the conjunction word. He as well as his brother is intelligent is the conjunction word. Okay. Let's next slide is correlative conjunction. Pair of words that correlate to equally important clauses or phrases in pairly.
either or and neither nor. As I have told you in my previous slide कि the correlative conjunction are conjunction in which we use conjunction word in pair. ठीक है, either or is in pair, neither nor is also in pair, not only but also in pair. Next slide. The example of coordinating conjunction, either you will eat your dinner or you will go to bed. ठीक है, या तो तुम अपना खाना खाओ या फिर बेड पे जाओ. इट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस एग्जाम्पल. ठीक है, ही नाइदर एम्प्लॉयड नॉर लुकिंग फॉर जॉब. ना तो वो एम्प्लॉयड है ना ही उसके वो जॉब ढूंढ रहा है. ये भी एक, ये निगेटिव वे है, ये पॉजिटिव वे है. जैसे कि मैंने पहले इस प्रीवियस स्लाइड में बताया था, आई हैव टोल्ड यू कि either or always use in positive way and neither nor always use in negative way. सीमा is neither rich nor famous. ना तो सीमा rich है ना ही famous है. He is not only intelligent but also very funny. वो ना नहीं यहाँ तक कि वो ना ही इंटेलिजेंट है और बहुत ही ज़्यादा फनी है. ही इज़ my new supervisor not only has exciting idea but also helps to bring them to life. ठीक है, all these are the correlative conjunction. Thank you for watching my channel. Please like and subscribe my channel if you like my video. Thank you. मम्मा देखो.